फ्रेंड्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ किटिंग के बारे में समझेंगे। मैं आपका होस्ट प्रोफेसर मनोज कुमार राउत आपको इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा। समझते हैं किटिंग क्या होता है। जैसे मतलब आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे, स्टॉक कीपिंग एसक्यू स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट्स ए एंड एसक्यू यू बी और एसक्यू बी सॉरी सी. So these are combinedly put in the SQD, stock keeping unit D. So if you goes to point number one, in inventory management and supply chain, kitting is a process is used to group together different item. So ये खास करके वेयर हाउस एंड स्टोर में यूज किया जाता है, खास करके ई कॉमर्स सेक्टर्स, रिटेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स और एसेंबल को कंबाइन करके एक ही कार्टून में मतलब रेडी किया जाता है. So if you goes to the next important aspect, together different items are often ordered at the same time with the purpose of streamlining the order fulfillment process, reducing picking errors, improve order accuracies. So kitting operations अजय मत इसलिए आपको समझाया, काफ़ी सारे छोटे एसेंबल को लेके एक ही कार्टून में डाला जाता है सो दैट जो प्रोसेस है ऑर्डर फुलफिलमेंट का उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए. The percentage of picking error should be reduced and improve order accuracy. It is commonly used in industries such as e-commerce, retail, and manufacturing, where businesses aim to optimize the order fulfillment process and improve efficiency. So, order fulfillment and efficiency को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे मतलब वेयर हाउस में किटिंग ऑपरेशन किया जाता है. तो आइए समझते हैं क्या क्या किटिंग प्रोसेस में आता है. जैसे स्टेप नंबर वन, determine which items should go into a kit. So here they basically go for complementary product. And the next is, do you commonly sell together? Do you sell a product that pair with the certain accessories? Then second step है, assign the new kit a unique stock keeping unit in your systems. Then third step है आपका, locate the item in your warehouse. Fourth step is assemble the kits, and the last one is that is only sales and ship the kits to the destinations. So next important part है उसका benefits. So benefit is save large amount of space in warehouse, reduce labor cost, increase product sales, faster shippings, reduce cost, and the last one is enhance warehouse efficiency. So यही है key benefits किटिंग के बारे में. वीडियो अगर आपको अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.